Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Samadhan Kale and we are going to our next topic in Python course, that is math module. Okay, so guys आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे. यस गाइज, सो हम आज का टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है मैथ मॉड्यूल इन पाइथन. ओके गाइज, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सब वीडियोस आप देख सकोगे और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द मैथ मॉड्यूल इन पाइथन. ओके, सो इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमने फोल्डर बनाया है बेसिक पाइथन. उसमें एक फाइल है पाइथन day1, ये हमने ली है. अब day2 और day2 भी हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे नेम इसका. ओके, ये अनटाइटल फाइल है हमारी, हम इसको टाइटल देंगे. ओके, सो लेट्स गिव द टाइटल टू दिस फाइल, rename it. We give this file name as math module. Okay, in math module. Yes, so this is saved. Now guys, so math module ये हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है. ओके, टू डील विथ बेसिक ऑपरेशंस such as addition, subtraction, multiplication, division. Okay, and advanced operators. Advanced operators means like trigonometric functions, logarithmic functions, exponential functions. Okay, some modulus functions, so square root, all these things are included in this math module. So let's start guys, both interesting. So first we import the math module. So import math. Okay, and run it. Okay guys, the math module is imported. Now guys, हमें क्या देखना है कि इस math module में कौन कौन से functions हैं. So we write the command as print dir of math. Okay, so dir means directory. Okay, in this math directory how many functions that we have to print, that's why we use this print dir of math. Okay, आज से आगे आपको किसी भी लाइब्रेरी का उसमें क्या है अगर पता लगाना है, दैट मीन्स उस लाइब्रेरी में क्या है ना, हाउ मेनी फंक्शंस. सो आप ये फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट dir, एंड इस मैथ की जगह पे आप जो भी लाइब्रेरी का नाम होगा वो डाल देंगे. ओके, so let's run guys and we get all these functions. Okay, this is the internal, this is internal from this a cos to this ulp. So these many functions are included in this math model. Okay guys, so let's see one by one. Okay, so first we see the constant. Okay, that means fixed constant, that means fixed constant कैसे होते हैं, हमारा पाई होता है. ओके, ई होता है ना. देन ई मीन्स यूलर्स नंबर. ओके, उसके बाद में टाउ, ऐसे दो तीन नंबर है. सो पहले उसको हम देखेंगे. ओके, सो कोड से हम मार्कडाउन में करेंगे और इधर लिखेंगे हम कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो अगर आपको हेडिंग देनी है तो आप दे सकते हो डबल हेडिंग कॉन्स्टेंट्स. ओके, कॉन्स्टेंट्स इन मैथ module. Okay, and let's run it. So first constant है हमारा यूलर्स नंबर. ओके, सो ई को हम कैसे लेंगे, अब हम मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है. सो मैथ डॉट ये सब फंक्शन के आगे मैथ डॉट लगाना है आपको. ओके, वेरी सिंपल. अब यूलर्स नंबर ई कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो ए बी सी डी ई. तो दिस इज ई गाइस. ओके, दिस इज ई. This e is constant, so we print the constant value. Okay, so let's type math dot e. Okay, then we will get this e value, that all we know the value of e 2.71828. Okay, and so on. Yes, so this is the first constant, that is Euler's constant or Euler's number. Next हम देखेंगे guys पाई होता है हमारा. ओके, तो हम प्रिंट फंक्शन भी लगा सकते हैं. सो प्रिंट
that is math dot pi. Okay, देखो pi किधर है, this is your pi. Okay, so math dot pi. So if we run this, we will get the value 3.141 and so on. Okay, so this is the pi. Now अगला function है हमारा tau. This is again constant. Okay, it defines the ratio of the circumference to the radius of circle. Okay, ratio of the circumference to the radius of circle. Okay, and it will return the constant value. So constant value return करता है 6.2 something. Okay, so हम इसको भी प्रिंट करेंगे. So print math dot tau. Okay, so this is the value of tau. Okay guys, so where is the function tau? So this is the tau. Okay, this is the constant. Okay, so these many constants are included. Now there is another constant, that is infinity. All of we know infinity. Okay, so plus infinity, minus infinity, हमने ये सब देखा है. Okay, मैं इधर ऐड करता हूँ एक्सेल. यस, सो अब इंफिनिटी के लिए फंक्शन है, देखो इनफीमम. ये इन INF मीन्स इनफाइनाइट, इंफिनिटी. ओके, तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी मीन्स something which is never ending. Okay, that means it is boundless from the direction. Okay, it means it has no upper bound, no lower bound. Okay, that is infinite. Now this infinity is negative also and positive also, but here only positive is given, infimum. Okay, हम इसको भी ले सकते, लेकिन ये ऐसा ही एंटर करेगा. सो मैथ डॉट INF means infinite. Okay, so it will give you infinite. Okay, अगर आपको रेंज लिखनी है किसी भी फंक्शन की, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे अगर इनफाइनाइट लिखना है तो ऐसा लिखेंगे मैथ डॉट इनफाइनाइट. यस, और एक सेल ऐड करेंगे हम इसमें. तो इसमें क्या होगा? minus infinity. If you want to take minus infinity, then math dot minus infinity. Okay, and then run it. Oh, invalid syntax, so we have to remove this one. This one also is again giving invalid syntax. Yes, this minus sign you have to write in front of this, then yes. Okay, if you want to print minus infinite, then give the minus sign to this. Okay, math dot infimum, give the minus sign. Okay, here before the math. Okay, now so guys, there is another function or another constant, that is nan. Okay, this is nan. Yes, so nan क्या होता है? Nan means not a number. जैसे कोई भी केस आएगी, जब आप डेटा साइंस पढ़ोगे या फिर कुछ मशीन लर्निंग पढ़ोगे, तो आपका टेबल होता है, कुछ तो वैल्यूज दी होती है आपको. यस, तो उसमें क्या होता है, एक सपोज एक कॉलम है, उस कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज है और कई रोज ऐसी है जिसमें कुछ वैल्यू दी नहीं है. एक ही कॉलम में बहुत सारी रोज, सपोज 10 रोज है एक कॉलम में, और उसमें 7 रोज में कुछ नंबर है और 3 रोज में कुछ भी नहीं है, डैश दिया है. दैट इज एन एन, दैट इज नॉट ए नंबर. ओके, अगर आपको नॉट ए नंबर पुट करना है या प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे? मैथ डॉट एन ए एन. ओके, so it will give nan value also. Yes, so these many constants are included. Yes, तो हमें ये दिखना चाहिए, इसलिए मैं नीचे नीचे ले रहा हूँ. ओके, तो इसको नीचे लेता हूँ. सेकेंड क्या है, इधर एक सेल ऐड करूंगा. ये हुए हमारे कांस्टेंट्स इन मैथ मॉडल. अब हम क्या देखेंगे? सम न्यूमेरिक फंक्शंस. इस मैथ मॉडल में कौन कौन से न्यूमेरिक फंक्शंस, तो वो देखेंगे हम. तो डबल हैशटैग स्पेस न्यूमेरिक फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस. यस, so code to mark down and run it. Okay,
we have to print some numeric function. I add here some cells so that we can able to view this one. Okay, now इसमें हम फर्स्ट फंक्शन देखेंगे गाइस, ये देखो सेल फंक्शन। यस, विच फंक्शन? सेल फंक्शन। अब सेल फंक्शन क्या होता है? सेल फंक्शन it will return the smallest integral value greater than that number, okay, or greater than equal to the number. सेल फंक्शन क्या है? it will return the nearest or smallest value greater than equal to the number. Okay, so हम देखेंगे कैसे। suppose we have take a is equal to some number, suppose 5, okay, and then we have to apply this function integral na, so 5.9 or 8, okay, 5.8, then we apply this math dot sale of this number a number को मैं सेल कर, so it will return 6। so इसकी डेफिनेशन का है सेल की। सेल मीन्स nearest integer greater than or equal to the given number। ये सेल फंक्शन का काम है। देखो अब 5.8 ये जो नंबर है ना, उसका नियरेस्ट इंटीजर फाइंड करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 5.8। अब 5.8 का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 6 है ना। ग्रेटर देन 5.8 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर हम ऐसा लेंगे, सपोज और कुछ लेंगे, मैथ और प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट और देन मैथ डॉट सेल suppose 3, okay, then it will write 3 only। yes, तो इधर भी प्रिंट लगाएंगे तभी इसका आउटपुट आएगा, है ना। ये आपको भूलना नहीं है, स्क्रिप्ट है ना, ये पढ़ाइए, तब ये प्रिंट फंक्शन लगाएगी तभी दोनों आए, अगर नहीं लगाया तो लास्ट का ही आएगा। यस, so this is the cell function। hope guys all of you understand the cell function। अगला फंक्शन गाइस हमारा फैक्टोरियल। यस, दिस इज द फैक्टोरियल। सबको पता है मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल मीन्स n into n minus 1, n minus 2 into n minus 3 up to so on 3 into 2 into 1, ओके, ऐसा होता है। लेकिन हम इधर क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऐसा ही लिख लेंगे, डायरेक्ट करेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ, we want to find 5, factorial of 5, so it will give 120। yes, obviously it is a 5 factorial is 120। yes, it's a very easy function। then guys अगला न्यूमेरिक फंक्शन है हमारा, here is the LCM, okay, LCM, all of we known LCM means least common multiple, okay, so we have to given two numbers, so use math dot LCM of suppose 2 and 3, okay, so it will give you 6, okay, 2 and 3 both are prime numbers, and we know that the LCM of prime numbers is their product, so 2 into 3 is the 6 least common multiple हम निकाल सकते हैं। सपोज अगर देंगे हम नंबर को बताएंगे 67 and 879, then comma देना है, I have given the dot, okay, then it will give you the LCM 58893, okay, you can find the LCM of numbers, okay। then अगला फंक्शन है हमारा greatest common divisor, GCD। where is the G? yes, this is the GCD function, greatest common divisor, very easy guys। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे गूगल कोलैब पर, है ना। गूगल कोलैब पर कैसे प्रैक्टिस करना है, गूगल कोलैब पे जाना है और यही कमांड्स डाल के उधर प्रैक्टिस करना है अपने मोबाइल में, है ना। जिसके पास अगर एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है
या फिर जुपिटर नोटबुक या और कोई भी सॉफ्टवेयर हो ना जिसपे पाइथन रन होता है, उस पे आप ये कमांड्स डाल सकते हैं। तो जीसीडी of suppose two numbers, suppose 2 and 3, yes again, so gcd of these two numbers is 1। कैसे 1 आया, हमें पता है, क्या पता है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो तो उसका जीसीडी और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, है ना। जीसीडी, जीसीडी इज द सीनियर टर्म एंड एससीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द जूनियर टर्म। ओके, 9 10th में हम उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और व्हेन 10th के बाद जीसीडी आ जाता है, सो दिस इज द 1। so this is one function। another function है guys, fabs function, where it is fabs, yes this is the fabs। okay, so fabs function का यूज क्या होता है guys, it will return the absolute value। okay, तो जिधर जिधर नीड है उधर मैं लिखूंगा उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, निगेटिव जो होता है उसका पॉजिटिव बना देते है ना। चलो एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन दिस। सपोज एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, सपोज दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ये कैसी होती है, इट इज माइनस एक्स एंड एक्स। ये माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0। एंड एक्स कब होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो इससे आपको पता चला होगा कि क्या होता है मॉड्यूलस। अब उसका क्या निकालना है हमें, फैक्ट, फैक्ट मींस एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का प्लस। चलो देखते, सपोज मैथ डॉट एप्स ऑफ -34। ओके, so run it, it will give you positive 34। okay, so इधर description लिखेंगे guys, returns absolute value of number। okay? Suppose if you want to take any positive number, then you can take math dot have of 34। okay, it will give you 34.0, है ना। the output is in floating number। okay, so remember this fabs function। आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा फैक्स फंक्शन। ओके, तो अगला फंक्शन देखेंगे हम, दिस डिस्ट फंक्शन, है ना। डिस्ट मीन्स यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस सबको पता होगा, है ना। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो दो अगर पॉइंट है, सपोज हम पॉइंट लेंगे a इज इक्वल टू, सपोज दिस इज द पॉइंट 2, 3, 2 डायमेंशन में ये पॉइंट है, एंड b इज इक्वल टू, दूसरा और पॉइंट लेंगे, सपोज इट इज 0 एंड -1, ये दो पॉइंट्स। ओके, हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस, सो मैथ डॉट डिस्टेंस dist of a comma b, very easy। okay, and let's run it and you will get distance guys। okay, अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे इससे, तो करके देखना, दिस 2 minus 0 2 square that is a 4 and 3 plus 4 square that is a 16 16 plus 4, ऐसा हम करेंगे और उसको स्क्वायर रूट निकाल के ये आंसर आए। ओके, so this is the Euclidean distance or distance formula। yes, dist function का यूज क्या होता है, it will return a distance between two points। okay, the explanation में returns distance between two। ओके, तो समझ में आया होगा डिस्टेंस फंक्शन। ओके, नाउ अगला फंक्शन लेंगे हम,
a cos फंक्शन. ओके, विच इज फंक्शन a cos फंक्शन. तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आना चाहिए, लेकिन ठीक है. ओके, वो ट्रिग्नोमेट्री में लेंगे हम. ओके, सेल हो गया. ये कॉम फंक्शन लेंगे. कॉम मीन्स ऑल ऑफ वी नो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, सो कॉम्बिनेशन होता है. ओके, सपोज इफ यू वांट टू फाइंड 5c3. ओके, 5c3. सो मैथ डॉट this is a combination comb of 5. So 5 comma 3. Okay, and just run it. So it will give you 10. Okay guys, अगर आपको इस फंक्शन का डिटेल चाहिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप अपना शिफ्ट और टैब ये बटन दबाएं. तो दिस विल गिव यू द डिटेल ऑफ दिस फंक्शन. तो क्या लिखना है, मैथ डॉट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एन सी के, ऐसा लिखते हैं ना हम, एन सी के. एन मीन्स 5 and c and k means 3, so 5c3. It will return a number of ways to choose the k atoms from n atoms without repetition and without order. Okay, so this is the explanation of this function. Okay, so formula भी दिया है n factorial upon uh, k factorial into n minus k factorial. ओके, ये सब कुछ दिया है, k greater than 1, ये सब आपको पता है. ओके, सो इसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं. यस, so here we give the description of this function. Okay, that we have. Once again, going on, backspace, tab, copy it. I will write this only. Okay, and paste it here. Yes, so this is the combination. You can write the combination also. Okay, now अगला है guys permutation. ओके, कॉम्बिनेशन हो गया, तो परमुटेशन. परमुटेशन के लिए PRM. ओके, कॉम्बिनेशन के लिए COMB. नाउ परमुटेशन, सो सेम है. मैथ डॉट परमुटेशन ऑफ, ये भी 2 नंबर्स करेगा. ओके, सो 2 नंबर, सपोज हमने डाला 3 कोमा, सपोज नॉट 3, 8 कोमा 4. Okay, then it will write the permutation. Okay, so अगर हम shift tab दबाएंगे, तो देखो, this is the thing that we have given number of ways to choose k atoms from n atoms without repetition with order. Okay, अगर k नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, है ना. देखेंगे हम ये कैसे आता है. okay, देखो, इसकी और इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो इधर फॉर्मूला दिया है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल. ओके, तो दिस इज द थिंग. इसका हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. इट विल राइट ए permutation. Suppose we remove this 4, write only 8, then we will get this output. It will take k automatically. Okay, so this is the permutation function. Now अब हम देखेंगे guys power function. Which function? Power. 1 second. Yes, it will cover in logarithms also, so power नहीं लेंगे. Suppose we take product function. Just I check product. Yes, product function. So if we take the product function, तो ये क्या करेंगे हम, देखेंगे इधर ही, मैथ डॉट प्रोडक्ट शिफ्ट टैब. ओके, तो देखो ये क्या है, इटरेबल. Calculate the product of all elements in the input iterable. Okay, the default start value for the product is 1. Okay, when the iterable is empty, return the start value. This function is intended specifically for the use of numerical values and may reject the non-numerical types. Okay, suppose we write 2, 3, then और क्या देना, स्टार देना क्या, then
यस, इसको हम कॉपी करेंगे. ओके, दिस वन and paste it here. Okay, and if we run, we will get invalid syntax. What is going on wrong? Yes, table are going to inputting follows keyword. What if we write product of 2 and 3? Yes, so okay guys, I will take this function in the next module. इसे देखना पड़ेगा. Okay, product function. So अगला फंक्शन है गाइस स्क्वायर रूट. ओके, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास क्या है, SQRT. किधर गया दिस फंक्शन. ओके, दिस इज न्यूमेरिक फंक्शन. so let us take square root of, इधर लेना है SQRT. math dot SQRT of, suppose we want to find the square root of 4. Okay, so square root of 4 is 2.0, that is the 2. Okay, so it will write square root. SQRT means square root. आप इसी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, और कौन सा बाकी है, इनफीमम हो गया. ओके, अब इज फाइनाइट ये फंक्शन है. इज फाइनाइट, इज इनफाइनाइट, इज एन एन हो गया, नहीं हुआ, एन एन हुआ. ओके, इज फाइनाइट, इज इनफाइनाइट एंड इज एन एन. ओके, तो फर्स्ट लेंगे इज फाइनाइट. इसका क्या होता है गाइस, जो भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर, वो फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट, वो लिखता है. सो देखेंगे हम मैथ डॉट सपोज इज फाइनाइट of, we write suppose 34. Okay, it will give output true. Okay, this is the true. Yes, it will give output true because 34 is a finite number. Now if we write this 30 instead of 34, math dot infimum है ना, math dot infimum और infinite. So ये क्या देंगे, false देगा. ये infinite, infinity, ये नंबर क्या है, it is not a finite. ओके, ये फाइनाइट है क्या, फाइनाइट नहीं है, इसलिए आउटपुट क्या है, फॉल्स है. ओके गाइस, अगला फंक्शन है हमारा इज INF मींस इज इनफाइनाइट. अगर वो नंबर इनफाइनाइट है या नहीं, ये चेक करेगा. so math dot is infinite of this 23. suppose we write 23, then it will write false because ये finite number है, it is not infinite. अगर हम ऐसा लिखेंगे, इसको प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट math dot okay is infinite of math dot infinite. ओके, ये math dot infinite मीन्स infinity. ओके, और इसको भी प्रिंट फंक्शन लगा लेंगे ताकि दोनों आउटपुट आ जाएंगे. यस, सो इट इज अ प्रिंट of this. Yes, this. Okay, and let's run it. फर्स्ट का तो फॉल्स आएगा. सेकंड वन, ऑब्जर्व द सेकंड वन. सेकंड में क्या है, इनफाइनाइट नंबर है, इसीलिए वो क्या है, ट्रू आएगा. इज इनफाइनाइट है ना, अगर वो इनफाइनाइट है तो ट्रू आएगा. ओके, नाउ इज एन एन. ओके, इज एन एन के लिए अगली सेल लेंगे. तो मैथ डॉट इज एन एन, कोई नंबर देंगे हम, सपोज 23. फॉल्स देगा क्योंकि 23 एन एन नहीं है ना. अगर 23 की जगह पर हम एन एन डालेंगे, अभी वो क्या आएगा, ट्रू आएगा. सो प्रिंट मैथ डॉट एन एन ऑफ मैथ डॉट एन एन है ना, ये भी तो एक कांस्टेंट है. तो अब क्या आया, 2 आया. सेकंड आउटपुट, ऑब्जर्व द सेकंड आउटपुट, मैथ डॉट इज एन एन
math.nn, math.nn क्या होता है, nn नंबर होता है, इसलिए वो ट्रू आया। ओके गाइस, सो दिस इज द थिंग, इज इनफाइनाइट हो गया। और क्या है, फ्लोर है ना, फ्लोर डिवीजन करता है, फ्लोर फंक्शन मीन्स फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होती है गाइस, फ्लोर डिवीजन मीन्स it will write only integer part, math dot floor of suppose 2.87, okay, so it will give you only 2। so इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, returns integer part, okay? it will only write integer part। so is nan, इसका क्या है, checks the number is infinite का ना, is infinite or not, okay? और इसका क्या है, चेक्स द नंबर इज एन और नॉट। हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इधर क्या करेंगे, एन ए एन, ओके, एन एन है कि नहीं, ओके। और इसमें क्या है, ये क्या करेगा, फाइनाइट है कि नहीं, है ना, फाइनाइट है कि नहीं नंबर, वो चेक करेगा, इज फाइनाइट, ओके। इन सब का डिस्क्रिप्शन हो गया, और किसका रहा है, डिस्टेंस का भी है, इसका भी, ओके ना। और कौन सा फंक्शन बचा है, इनफाइनाइट भी हो गया, दिस डी एंड दिस वन, यस, एक्सपोनेंशिएशन, लेकिन वो हम लॉगरिथम में देखेंगे, ओके। अगला सेशन उसका होगा लॉगरिथम का, उसमें देख लेंगे एक्सपोनेंशिएशन, ओके। बाकी के सब फंक्शन जो है उसमें 2-3 पार्ट्स किए हुए है ना, ये मैथ मॉड्यूल के, उसमें हम देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको मैथ मॉड्यूल का ये न्यूमेरिक फंक्शन समझ में आया होगा। एंड और कौन सा फंक्शन लिया है हमने, कांस्टेंट इन मैथ्स मॉड्यूल। ओके गाइस,